दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वर्ल्ड एंड कंप्यूटर आईटी बायोटेक हब सिलिकॉन वैली सैन होजे, जो अमेरिका के मगरबी किनारे पर वाक़ है, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन की एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन, जो तमाम उन लोगों को मुत्तहदा प्लेटफॉर्म मुहैया करती है जो पाकिस्तान के साथ हाई टेक स्टार्टअप और आईटी के कारोबार में ताउन करती है। इसके अलावा मकामी तौर पर कंपनी के मालकान और न्यू कमर को मौके भी फराहम करती है। इनका एक लोकल विंग है और एक ग्लोबल विंग है। इस साल ओपन के सदर जनाब जुनैद ने, जिन्होंने ओपन के शानदार तरीके से लीड किया और सेंटा क्लारा के कन्वेंशन हॉल में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का मुजाहरा भी किया और नई प्रोडक्ट मुतारिफ कराई गई। इसमें काबिल जिक्र सबसे इकोनॉमिक मोटर बाइक जो बिजली से चलने वाली है मुतारिफ कराई गई, जिसका नाम है हाइडर, जो पाकिस्तान में बन रही है और पाकिस्तान को दुनिया भर में ये पहली ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट जो है लॉन्च हुई है। सेंटा क्लारा में होने वाले पाकिस्तान में नामवर लोगों ने शिरकत की, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर आरिफ हबीब, नेटसोल के नजीब गौरी, LA शोएब कोटावाला और सैन होजे से अली खान काबिल जिक्र लोगों में है। गूगल, फेसबुक और मुख्तलिफ आईटी कंपनियों ने भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें रागिब हुसैन भी काबिल जिक्र शख्सियत है। हम टीवी की सरबराह सुल्ताना आपा इस तकरीब की रौनक रही हैं और शानदार तकरीब में आरिफ हबीब साहब और सुल्ताना आपा को भी अवार्ड से नवाजा गया। नजीब गौरी के नेटसोल को भी उनकी सलाहियतों को देखते हुए अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान और कौंसल जनरल आसिम अली खान ने भी शिरकत की। इस सिलसिले में कई तकरीबात हुई, जिसमें स्टैनफोर्ड में बिजनेस ग्रुप से मीटिंग, अलमनाई, नस्ट अलमनाई की तकरीब शामिल हैं। ये पाकिस्तानी अमेरिकन की सबसे बड़ी और अज़ीम-उश-शान तकरीब हुई है, जिसमें जुनैद कुरैशी ने तकरीब से नहायती डेडिकेशन के साथ सजाई और पेश की। इस तकरीब में कई अमेजिंग हाई टेक प्रोडक्ट सामने आई हैं। अंदाज़ा है कि अगर गो के वतन से दूर लेकिन वतन से मोहब्बत लगाव बढ़ता जा रहा है। ये तमाम काबिल जिक्र लोग जहां अमेरिका को हाई टेक टेक्नोलॉजी में ताउन और मदद करते हैं, वो हजारों मील दूर रह के भी अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं और सरगर्म हैं, और वो चाहते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान इनके साथ बर वक्त ताउन करे और फॉलोअप करे तो पाकिस्तान में बहुत जल्द एक मिनी सिलिकॉन वैली जन्म ले सकती है। पाकिस्तान के सफीर जनाब मसूद खान ने OpTv ग्लोबल से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे नहायत फ़ख्र है कि हमारे नौजवान सिलिकॉन वैली में आकर अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो आला ओहदों पर फायज हुए और अमेरिका की मुमताज़ कंपनियों में आला ओहदे हासिल किए। ओपन की तकरीब में इनसे मुलाकात का मौका मिला और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि वतन से दूर वतन की खिदमत का जज्बा इनमें कूट कूट के भरा है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस किस्म की तकरीब होती रहेंगी। इस मौके पे वहाँ पे मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब भी मौजूद थे। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में सफीर मसूद खान ने काफ़ी दिलचस्पी ली और शरीक पैनल से गुफ्तगू भी की और पाकिस्तान में इसकी अमली तौर पे लॉन्च करने के लिए जस्तजू की। जिसको बकार साहब आप और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये ओपन का जो एनुअल फोरम है ये पहली दफ़ा आया और माशाल्लाह यहाँ पर बड़े टैलेंटेड और सक्सेसफुल कंपनी से मुलाकात हुई है और अच्छा फोरम चल रहा है और मेरा ख्याल है कि इस तरह के फोरम जो है बहुत हेल्प प्रमोट करने के लिए thank you very much for coming to the Silicon Valley. Silicon Valley is not only a software, it is also the biotech hub. जितनी non-approved FDA product है worldwide accepted है, open engineering, and also engineering. ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा गेम है, और हम इसका देख लिए उम्मीद है कि तो आज
आज माशाल्लाह आप सिलिकॉन वैली आई हैं. Definitely हम TV the icon of the television industry and broadcast industry. Your awards, your programming, your dramas, top of the top, inshallah. So how do you feel being in Silicon Valley? मैं सिलिकॉन वैली की तो पहले से बड़ी दिलदादा हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो यहाँ अपने बेटे को न भेजती, जुनैद को. और जुनैद इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब. मैं ये सोचती हूँ कि जो यहाँ के हमारे लोग हैं, जो हमारी डायस्पोरा है, यहाँ हमारे लोग जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो अपने कामों के साथ, मैं समझूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है. अब ये देखें ओपन का जो हुआ है, मैंने इससे बड़ा जो है कभी यहाँ पे फंक्शन नहीं देखा है सिलिकॉन वैली ओपन का जो है. तो मैं दुआ करती हूँ कि हमारे लोग इसी तरह से काम करते रहें अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए. इससे बेस्ट कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. थैंक यू वेरी मच आपा, थैंक यू. ओपन की सालाना तकरीब में पाकिस्तान के मैनाज ताजिर आरिफ हबीब ने खिताब किया और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली. First invented, but we have never been able to do it. We had many approximations. So, for example, in 1995, before Windows 95 came, we had something called DOS. Show of hands, how many of you used DOS at least once sometime in your career? So now we're aging ourselves, but about 40% of the room raised their hand. So DOS was very hard to use. You had to remember all the commands, all the options. Extremely hard for the. ओपन की तकरीब में पाकिस्तानी टूरिज्म को भी फरोग दिया गया, खुसूसन नॉर्दर्न एरिया पर. इस मौके पे मारूफ मोटर बाइक एक्सपर्ट और गुरु ने इसके फरोग और इसके मौक़ों पर रोशनी डालते हुए कहा. Yeah, absolutely. So the problem we're solving is how do we make electric motorcycle adoption easy for countries like Pakistan. The main barriers to entry are their current motorcycles are very expensive, electric motorcycles are expensive, there's range anxiety, it takes too long to charge them, and there's no public infrastructure. So our solution addresses all of those problems. Our motorcycles are priced at or below the price of a gasoline motorcycle, comparable gasoline motorcycle. And you don't have to, it doesn't take 2 hours to charge the motorcycle. You just do a swap. The battery swap, and within a minute you're off. You're on the road. And this swap network, because we're building the swap network, our own swap network with the energy kiosks which we have developed in Pakistan, we're explicitly solving the problem of the infrastructure, right, not being available. And finally, the whole thing is connected. The bikes are smart. They have cloud connectivity. They're GPS connected. So they're all connected to this a cloud infrastructure that allows you to track where you are, theft detection, fall detection, automatic emergency services being called, all of those value-added services can be built on top of this cloud platform. And the key thing is the pricing, right? So pricing, right? So on these motorcycles are always priced to be at or below the equivalent gasoline motorcycle. So if this is equivalent to like a CG125 in Pakistan, and this is priced lower than that. It'll be priced lower than that. And on an operating basis, right, on an operating cost basis, we are targeting to have a cost that's all factors included. The operating cost on a per kilometer basis is supposed to be less, substantially less than what it is for gasoline. So on both ends. So what is the maximum range would be? Yeah, so on a single swap. So we are actually delighted to have our guest speaker Liza and a bunch of other speakers for the Tourism in Pakistan panel. The panel is about opportunities in Pakistan for American and Western tourism people to go and travel Pakistan in a safe environment. Liza actually has been remarkable. She's been taking women from area and abroad to Pakistan on motorbikes to Hamza, and they actually are called Pakistan. And she's actually also written about it on Motorcycle Magazine as Pakistan as one of the destinations for women. Monica, you are a bike rider? You're a bike woman? Okay.
daughter with the 1,000 wings here. Amazing. Really? I love discovering the people there and the cultures there. And exactly. And nothing is what we expect based upon our exposure to Western media. Of course, as you all know that Pakistan is a youth bunch. We have raw talent available, all like in scale, in masses. If we don't take care of them today, it will be a huge problem. So what these, you guys, individual levels, company level, what you can contribute is development of those people. We need mentors, as we just heard from our previous session. Mentorship is key. Like, they need to learn because they don't have the exposure what we have the exposure. We can come and have the exposure and learn from what US market is and so on and so forth. So a lot of training, like I can give you an example, what can create a true impact. You must have heard like from various forums, like there are Pakistan has hundreds of thousands of freelancers. Just imagine, just take a number of 100,000 freelancers. Even if the government says 500,000, I will discount that and just say 100,000 freelancers. Right now, their yield is $400 per month. It's documented. If we can create programs to upskill, reskill them, what's going to happen? We can easily, you guys work in Silicon Valley, like just imagine if their yield becomes to $1,000 to $1,500, $8 to $10 an hour, we are going to add $1 billion foreign exchange for these freelancers and we will change their lives. So it's little impact, little contribution of creating that kind of an ecosystem, opening vocational training programs. You guys can run the bootstrap. These are the call to actions. If we want to really create an impact in Pakistan, we have to train our youth. And it's not just, we were just hearing the previous session, it's not just about IT development, it's the BPO sector as well, IT-enabled services, where you don't need computer science graduate. We have a lot of accountants, we have a lot of HR people, we have a lot of leaders. So again, huge investment opportunity to thrive and revive Pakistan, young talent and youth budge. And the third is the startup ecosystem, right? Just imagine, Pakistan has about 250 million people. So all these, we have so many use cases in the ecosystem. If we just solve our own problems through these startups, we can create a massive impact. So what these startup needs today from this community, or from the investors like you or many others, that they need to have a mentorship in how the unit economics work, how to scale the idea, how to take this and solve the business problem, like we just heard in the previous session, contextualize it and solve the business problem, create the use cases or change the landscape. And again, we have so much local people and local issues. If we solve it, it's going to be massive for the country and massive investment, and FDI is going to be attracted. So Pakistan is an immense opportunity for, if we just need to unleash, we just need to pick up any area of interest, whether you want to create the demand through your connections and build a steady IT services or outsourcing business, want to create the supply and build the talent, or you can create an innovation and entrepreneurship and startup ecosystem. I think if we can focus on these three building blocks, I think Pakistan, we can increase our exports, bring FDI, and create the jobs in the country, which our country needs badly. Thank you, thank you. So identifying problems and specific training for our people. I think those are some very important points. So how can we attract more investment in Pakistan? And apart from IT, what sectors hold the most opportunities for investors in the capital markets of Pakistan? You see, in Pakistan, there are two types of investment opportunities. One is for the professionals, investors, who in fact make investments out of their savings, and they in fact always see that where they would be able to get good returns and better returns
when comparing to other jurisdictions. So there we have the opportunities in the capital market, both in debt and equity. Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OpTv Global. आप देख रहे हैं OpTv Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OpTv ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OpTv ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OpTv ग्लोबल। अरशाद बारी ताला है, हम कुरान में उतारते हैं वो चीज़ जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। जब कोई मुसलमान किसी मुश्किल में होता है और ज़िंदगी के अहम फैसले करना चाहे तो उसे चाहिए इस्तिखारे की रहनुमाई हासिल करे। संत की शादी, वीज़े में रुकावट, औलाद का नाफरमान होना, शोहर की बेवफाई, तलाक के मसाइल, इन तमाम मसाइल की रहनुमाई के लिए राब्ता करें। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge.
The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OpTv is now available on Roku. Please tune in to Roku. OpTv की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।